Done. Okay. Thank you. Sorry guys. तो यहाँ जूम कर लेते हैं ना हम। हाँ ठीक है। डन। Yes, sir. Done, sir. Done, sir. Done, डन। sir. इसको नोट कर लेते हैं। Done, sir. तो किया था हम लोगों ने। Done, sir. डन ठीक है। तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द केएसपी थिंग है ना। चलिए। So we saw that let me copy this down to today's class. Hmm. So we saw in the last lecture that the salts there are of three different types: soluble, or slightly soluble, and sparingly soluble. And equilibrium will only exist sparingly soluble salt. For example, AgCl. Now, when AgCl it is going to get dissolved, it is not going to completely dissolve. It is going to have some, and there will be some what you can say some ions in the aqueous medium. If I write now, whenever there is a equilibrium existing, we can write the equilibrium constant. Now, in this case, the equilibrium constant will be equal to the concentration of Ag positive into the concentration of Cl negative divided by the concentration of AgCl solid, but because it is solid, we take it as 1. Correct? Yes or no? Please tell me. So basically, we will be remaining with KSP is equal to Ag positive and Cl negative. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. ठीक है? तो बोलो भाई. Yes or no? Yes, sir. ठीक है? चलिए. Next, Yes, sir. for example, if I have BaSO4 solid, and if it is a sparingly soluble salt, then it is going to get converted to Ba2 positive plus SO4 2 negative. The KSP for this particular salt be equal to the concentration of barium 2 positive into the concentration of SO4 2 negative. Make sense? Yes or no? Please tell me. ठीक है? तो इसी तरह से what we can do, we can write the KSP for different salts. ठीक है? तो उसको सबसे पहले हम लोग सीखेंगे. Can I move on? बढ़े आगे? Guys, tell me, should I move on? Yes, sir. Yeah. ठीक. One चलिए, minute, I'm sir. going to write the salts. Is anyone saying something? See, if I have PbCl, then PbCl2 will get dissociated into Pb2 positive plus 2Cl negative. Now, in this case, you have to be careful. You see, the KSP for this salt will be written as the concentration of Pb2 positive, ठीक है, into the concentration of
Cl negative squared. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. बात समझ में आ रही है? बोलो भैया, बात समझ में आ रही है? Yes or no? Please tell me. Can you see why the square is there? अरे यार, can I get answers? Yes or no? कुछ तो बोलिएगा, सिर्फ लिखना है आप लोग को भाई. बोलो. अली, जोबिता, जसलीन, शाइमा, जैनब. Does this make sense? Yes. sir. ठीक है. Secondly, tell me, है ना? अब माइक ऑन करके बोलिए. MgOH whole twice. We will dissociate into. Tell me, what are the ions that we are going to get? Tell me guys, tell me, जल्दी बोलो यार. इतना टाइम आप लोग क्यों लगाते हैं? माइक ऑन करें और जल्दी जल्दी बोलिए. MgOH whole twice. हाँ. What will be the ions? नहीं पता. अरे यार, ये हाँ. Mg2 plus and Negative. 2OH negative. Okay, so the KSP for this will be what? What are the ions? Jaldi, 2OH negative, 2H, my bad. हाँ, KSP will be? अरे यार, इतना टाइम क्यों लगा? Tell ना guys. Mg plus Mg2 plus OH minus square. OH minus. OH minus square. Very good. ठीक है. अब देखिए इस तरीके से ना going to be multiple salts. ठीक है. So what I am going to do, I hope you got some idea. We are going to write a few things more. एक तो केस आपके पास केस नंबर 1 सॉल्ट का क्या बन जाएगा? केस 1 of the salt will be if you have a salt of type, let us suppose AX. The number of cation and the number of anion is going to be same. तो जो अब आपके पास AX होगा, it is going to get dissociated into A negative, sorry A positive होगा X negative. ठीक है. धीरे धीरे हम समझा रहे क्या करना चाहते हैं. A will be positive plus X negative. ठीक है. नाउ इफ लेट सपोज ये तो आपके पास स्टार्टिंग में जो भी AX सॉल्ट होगा, कुछ तो यहाँ पे ये होगा, है ना? एंड देन इट इज गोइंग टू गेट डिसोसिएटेड. द अमाउंट ऑफ A positive and X negative will be same, right? So for example, if S is the amount of A positive in the solution, S will be amount of the X negative also, because अगर A plus टूटा तो obviously X negative will be present. Make sense? Yes or no? Please tell me guys. आ रही बात समझ में? हाँ या ना? Tell me guys. अरे बोलो यार, जल्दी बोलो. No. Yes, no. The amount of A, I'm writing the concentration of A as S, the concentration of X negative as S. ठीक है. S is the concentration here. So whatever amount of A positive will be there, the same amount of X negative will also be there. Yes or no? यार आसान. yes or no बोल दो ना. yes बोलिएगा तो ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, तो फिर से दोबारा समझाएंगे. yes or no guys? Yes, sir. बाकी ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं यार? आप लोग हद कर देते हैं यार. शायमा, जसलीन, जोबिता, नहीं आ रहा है क्या समझ में? वो पर यार क्यों? why you guys are like this यार? शाइमा, Yes, sir. व्हाट हैपेंड? इतनी देर से आवाज दे रहे हैं, अभी आपको यस सर नाम लेके बोला जाएगा क्या यार? यार आई एम सिंपली सेइंग इफ यू डोंट, देखिए आई नीड क्विक आंसर. आपको अगर आपको जल्दी समझ में नहीं भी आ रहा ना, से नो सर. ठीक है. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, से नो सर. आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग. आई एम ओनली गोइंग टू री एक्सप्लेन इट टू यू. जिसको नहीं समझ में आएगा उसको इंडिविजुअली फिर हम एक्सप्लेन करेंगे ना. Can you explain it again? हाँ तो बोलिए, लेकिन देखिए आई नीड क्विक आंसर्स. आया नहीं आया सर, ठीक है, तुरंत हम फिर बताएंगे. आया, ज्यादा आप लोग को अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है. डोंट ट्राई, मतलब अपने आप को आप समझ समझाइए. अगर जहां पे जरूरत पड़ेगी ना कि हम बोल देंगे आपको, आप ये चीज अपने आप को थोड़ा दिमाग लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. बट व्हेन आई आस्क आंसर्स, नो वेरी क्विकली. लेट अस सपोज वी हैव 100 AX. ओके. जैनब, अब देखिए आंसर चाहिए हम. क्या आप ही को समझा रहे तो आप माइक ऑन करके रखिए प्लीज. माइक ऑफ नहीं होना चाहिए फिर. ठीक है. लेट अस सपोज वी गेट 50 A पॉजिटिव. तो इस 100 में से 50 टूटा होगा. 50 वुड हैव बीन ब्रोकन. यस और नो? Yes, sir.
So if I get 50 A positive, I will get 50 X negative also, because 50 of the AX has been broken. So when AX will break, it will get the same. जितना A टूटेगा उतना X भी टूटेगा. आ रही है बात समझ में? Yes, sir. Makes sense now. So if the amount of A positive in the solution is S, the amount of X negative will also be S. Does this make sense? Yes, sir. Now we know that the KSP, it is equal to the concentration of A positive, the concentration of X negative. Now the concentration of A positive is S, the concentration of X negative is also S. So I can write the KSP is equal to S square. KSP, it is equal to S square, and I can also say the solubility will be equal to under root of KSP. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. The mathematics here, does this make sense, guys? Yes or no? Yes, sir. Raise your hand once Yes, you're done. sir. इसमें कौन कौन से examples of this salt will be? Examples salt will be NaCl. NaCl वगैरह तो not, these are not sparingly soluble salt, these are completely soluble salt. तो तीन AgCl है ना, AgCl आ जाएगा. Then we'll have BaSO4. Even though it looks like यहाँ पे polyatomic, but this SO4 is going to be one ion है ना. BaSO4 will be one ion. Let me see here. CRT उसमें बहुत सारे solubilities दिए हुए हैं. From there I can copy some. Thallium bromide, thallium chloride, thallium, all of these salts. Thallium chloride, thallium bromide, thallium iodide. है ना, उसी तरीके से कॉपर आयोडाइड, कॉपर सल्फाइड, और भी है. NaCl, it is not sparingly soluble salt, it is completely soluble salt. ठीक है, that is why not NaCl. We are only going to look at जहाँ पे नमक डालिए तो नमक पूरा घुल जाएगा. ठीक है, that is why we are not going to talk about कितना sparingly soluble salt के लिए इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है. ठीक है, make sense है ना? Yes, sir. चलिए, right, next the case number 2. Where we will have AX2 type of salt. AX will give me AX2 में A2 positive होगा, plus I will get 2X negative. सही है. So whatever the amount of A I will be having, double the amount, उसका ही double हमारे पास X होगा. Correct है? Yes or no? Please tell me. Because when we have AX2, तो जब ये टूटेगा तो I will get 1A and I will get 2X. Right? So if S is the amount of A in the solution, 2S will be the amount of X negative. Does this make sense? Yes or no? Please tell me, guys. बोलो भैया, आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है. KSP will be equal to the concentration of A2 positive into the concentration of X negative squared. Concentration of A2 positive is S. Concentration of X negative कितना है? What is the concentration of X negative? What is the concentration of X negative? अरे बोलो भाई. हाँ, 2S. इसका स्क्वायर कर देंगे. So getting S 2 to the 4 and S square. So it will be equal to KSP will be equal to 4S cube. So I can say S will be equal to KSP upon 4 का रूट, क्यूब रूट में भी. करेक्ट है गाइस? प्लीज टेल मी. Yes, sir. ये याद रखिएगा, आपको इतना ये इसकी याद रखने की जरूरत नहीं है. KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर, दूसरे केस में 4S क्यूब. अभी वी आर गोइंग टू टेक
also? अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके पास AX2 हो चाहे A2X हो, बात बराबर होगी, हाँ या ना? आई मीन दिस विल बी द सेम ना, ये बताइए आप। Yes, sir. बड़े आगे। Can I move on? Yes, sir. केस 3 लिखिएगा। When you have AX3 type of salt, ठीक है? तो AX3 will break into, tell me कैसे ब्रेक होगा बताओ, बोलो, थोड़ा दिमाग लगाओ ना यार, पुराने वाले केस से बोलो, जल्दी बोलो। A positive A3 positive. A3 positive plus 3x negative. BX negative. 3x If negative. I have S amount of A, how much will be X? X कितना होगा? 3s. 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 Very good. So the KSP, that it is equal to the concentration of A में 3 positive into the concentration of X negative में Q. A3 positive is going to be S, है ना? In 3S का cube. So this will be equal to how much? S के तो power 4 हो जाएगा and it will be 27, right? Make sense, yes or no? Yes or no, guys? Yes, sir. Yes, sir. Case number 4. कितना नहीं आएगा वैसे आप लोग को, है ना? फिर भी आई मीन दे कैन आस्क यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं पूछेंगे होपफुली, बिकॉज रूट आपको करना नहीं आएगा ना अभी विदाउट कैलकुलेटर। इफ यू हैव A2X3 टाइप, अच्छा AX3 का एग्जाम्पल कुछ लिखा देता ना, AX3 का एग्जाम्पल में CrOH होल 5 है, what else we have, FeOH होल 5 है। Now in this case A2X3 will dissociate into AP3 positive plus, अच्छा there will be 2A3 positive and there will be 3X2 negative, so this will be 2S and this will be 3S. Does this make sense, yes or no, please tell me? Yes, sir. So the KSP will be equal to the concentration of A3 positive squared into the concentration of X2 negative to the power cube. So this will be equal to what I can say is 2S squared and 3S cube. So 3 2 to 4 into 27 into S to the power 5, which will be equal to I think 108 होता ना, yeah 108, 25 25 forza is equal to 100 and 27 2 है, 2 forza 8, so it will be equal to 108 S to the power 5. This is going to be that. For example, for example, for example, for example, इसकी आठी में नहीं है क्या कोई example? We have hmm, this one, we have an example. Hg2 Br2 we have, Hg2 Cl2 we have.
इसमें नहीं दिया हुआ कोई एग्जांपल आप लोग को, बट दे कैन आस्क यू डायरेक्टली कि लाइक केएसपी इस सही का क्या होगा. So you have to write down this 108 s to the power 5. अब एक in general case लिखेंगे. Let me know once you're done. Are you done, guys? Yes, sir. Done, sir. Done. So in general, if I have something like this, let us suppose if I have ax and by, then the ksp, if you look, the ksp will be equal to, पहले तो आपके पास ax and by है, तो it will be what, इस केस से लिखेंगे c, 2 के पावर 2, तो x टू दी पावर x इंटू वाई टू दी पावर y हो जाएगा, x टू दी पावर x इंटू y टू दी पावर y. आई थिंक दैट्स व्हाट वी गॉट हियर ना. ये 2 टू दी पावर 2 एंड 3 टू दी पावर 3 है. यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस, डज दिस मेक सेंस? यस और नो, Yes, sir. है ना. तो वट एवर दिस नंबर इज, x एंड y जो यहाँ पे था ना, जैसे यहाँ पे है 2 और 3 था, तो 2 टू दी पावर 2 एंड 3 टू दी पावर 3. हियर वी हैव 3, तो सिर्फ 3 टू दी पावर 3 आया, 1 टू दी पावर 1 विल बी 1 ओनली. डज दिस मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस. आ रही बात Yes, समझ sir. में? ठीक है. इनटू विल बी हैविंग s to the power of x plus y. Does this make sense? Yes or no, please tell me. Yes, sir. ठीक है ना. जैसे यहाँ पे s to the power 5 कैसे आया, 3 plus 2 से आया. चलिए, कैन आई मूव ऑन? तो सवाल करते हैं हम लोग एक दो, है ना. KSP of, KSP ना लिखिए ना, they can tell you solubility product of AgBr is 3.3 into 10 to the power minus 13. Calculate its solubility. कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान से देखिए. सो वी नो दैट फॉर दिस केस, जब आपके ए बी टाइप का केस हो, तो के एस पी इट इज इक्वल टू व्हाट, एस स्क्वायर, राइट? यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस, है ना. तो Yes, दिस sir. एस इज गोइंग टू गिव यू द सॉलिबिलिटी. सो एस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के एस पी, which will be equal to how much? S will be equal to 3.3 into 10 to the power minus 13 under root. And I can write this as 33 to 10 to the power minus 14 under root, which will be equal to 10 to the power minus 14 will come out. It will be 10 to the power minus 7 into root 33. Root 33 will be approximately 6 होता तो 36 होता, 5.8 करके देखते हैं. 5.8 and 5.8 will be 8 is 64 and 8 5s are 40. 40 plus 6 will be equal to how much? 46. 8 5s are 40 and 5 5s are 25. 25 plus 4 will be 29. We are having 4 6 9 4 13 3 हाथ रहा 1, so 3 point, हाँ, we are getting 5.8 से थोड़ा कम ले लेते हैं, 5.7 ले लेते हैं. It will be around that only, है ना. So why did I choose 5.8? Because 6 into 6 is equal to 36. So obviously I have to lower these two numbers in order to get, I have to get 33, so 5 point something होगा. ठीक है. So moles per liter will be the solubility का जो ये होता है, क्या बोलते हैं, यूनिट.
बढ़े आगे। कैन आई मूव ऑन? Yes, sir. पक्का? चलिए, now we are going to do another question in which there is a introduction of common ion effect. इस तरह के सवाल कर लेंगे ना आप लोग, yes or no please tell me guys? इस तरह के सवाल अगर होंगे तो कर लेंगे ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल लेट मी, इस तरह का सवाल हुआ, थोड़ा सा अलग सवाल है बट होपफुली इफ यू जस्ट try to understand you will get the answer. इसमें 0 to the power में दिस विल बी 10 होगा ये यहाँ पे ना, ठीक है, 10 to the power minus 17, which will be more soluble? दोनों का s निकाल लेंगे एंड देन यू कैन प्रेडिक्ट ना। बात समझ में आ रही है? we have NiOH whole twice and we have AgCN, ठीक है। तो इस केस में जो KSP होगा will be equal to how much? 4s cube. In this case the KSP will be equal to s square. S1 कर लेते हैं, इसको S2 कर लेते हैं। You need to calculate the S1 and you need to calculate the S2. Whatever is going to be greater, C की solubility ज्यादा होगी। Make sense? Yes or no please tell me? हाँ, समझ में आ रही है? नहीं आ रही है क्या? Does this make sense? You can see the KSP Yes. values have been given. You can calculate the solubilities. Once you calculate the solubility, compare it. Whatever is going to be larger, that will be more soluble. ठीक है guys? हाँ या Yes, ना? sir. ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। Now I am going to show you the case in which have a common ion effect का केस आता है। तो इस ये इंपॉर्टेंट है, जरा इस सवाल को लिखिए आराम से। Calculate the solubility product solubility product नहीं होगा, एक सेकंड। calculate the solubility of barium sulfate in 0.05 molar barium chloride solution. KSP of barium sulfate is equal to 1.1 into 10 to the power minus 10 molar. ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है इसको समझते हैं। प्लीज टर्न योर माइक ऑन एंड आंसर में। सबसे पहली चीज है, we have to calculate the solubility of barium sulfate in 0.05 molar barium chloride solution. यानी कि आपके पास सोल्यूशन में we already have barium chloride BaCl2। अब देखिए BaCl2 का तो KSP नहीं दिया है। Yes or no guys? Do we have the KSP of barium chloride? Do we No, have sir. the case? That means this is completely soluble. No. ये पूरा डिसोसिएट होगा किसमें? बेरियम 2 पॉजिटिव एंड 2 क्लोराइड नेगेटिव में। Does this make sense? Yes or no please tell me? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir.
Now, once you add barium sulfate, तो barium sulfate जो होगा वो कैसे टूटेगा? Barium sulfate will be having an equilibrium because it is a sparingly soluble salt. How do we know, sir, it is a sparingly soluble salt? Because they have given us the KSP. KSP दिया है, that means it is sparingly soluble salt. अगर KSP पूछता भी, then also it is going to be sparingly soluble salt, or we have to assume at least it is a sparingly soluble salt. ठीक है, जब अगर KSP पूछे भी आपसे, तो barium sulfate will also have barium 2 positive plus SO4 2 negative. Now, if there was a solution, please ध्यान सुनिएगा, don't write anything, try to understand. If there was a solution in which we had only barium sulfate, we had only what? बोलो भाई, we had only Barium sulfate. barium sulfate, then there will be some breaking of barium sulfate और फिर Ba2 plus और SO4 2 negative मिलता है. But right now we have barium chloride also, in which the barium 2 positive is completely there. Barium 2 positive बहुत ज्यादा already है. We already have too much of barium 2 positive. That is why in the presence of a common ion, याद कीजिए, है ना, ionic equilibrium के basics में, in the presence of a common ion, what happens? The weak electrolyte, इसकी dissociation कम हो जाती है, and this goes backward. Yes or no? Please tell me. याद आया? Common ion में यही तो होता है, हाँ या ना? Yes, sir. Right? तो इसके dissociation में कुछ कमी आ जाएगी, है ना, इसके dissociation में कुछ कमी आ जाएगी, लेकिन होगा एक चीज कांस्टेंट रहेगी. if you have a if you have a barium sulfate solution, the KSP is going to remain same. KSP will be equal to the concentration of barium 2 positive. Where? In the solution. Where? In the solution. It doesn't matter where the barium 2, whether the barium 2 positive it is coming from barium chloride or barium sulfate. It is the concentration of barium 2 positive into the concentration of SO4 2 negative. Into the concentration of SO4 2 negative. Now, we know that from this particular case, from this particular reaction, that is dissociation, BaCl2 giving Ba2 positive and 2Cl negative, the concentration of BaCl2 is how much? What is the concentration of BaCl2? Bolo bhaiya, what is the concentration of barium chloride? What is the concentration? बोलो ना यार, बोलते क्यों नहीं यार? सवाल पढ़ो, सवाल में लिखा हुआ है, इतना टाइम लगाते हैं आप लोग. What is the concentration of barium chloride? बाकी लोग को नहीं आ रहा क्या? जैनब आप मत बोलिए तो. हाँ, जैनब आप मत बोलिए. बाकी लोग क्या करने आए फिर यहाँ पे? 0.05. And this is completely dissociating, yes or no? Yes, sir. So we will get 0.05 molar barium 2 positive and 0.05, जिसका डबल मिल जाएगा 2 into 0.05 molar chloride, क्योंकि अगर आपने एक बेरियम क्लोराइड को तोड़ा तो 2 क्लोराइड मिलेंगे, है ना. If I break one barium chloride, I will get 2 chloride ions. Yes, sir. इसकी इतनी जरूरत नहीं है, but we need the Ba2 positive. So right now the concentration of barium 2 positive, it is coming from two different places. अच्छा, जितना Ba2 positive यहाँ से टूटेगा उतना ही सल्फेट भी टूटेगा, yes or no? BaSO4 जितना टूटेगा Yes. उतना, ठीक है. So barium 2 positive, it is coming from two different sources. One is from barium chloride, that is equal to 0.05 plus X, it is coming from barium sulfate, multiplied by X of the sulfate will be equal to the KSP, which is equal to 1.1 into 10 to the power minus 10. Now, you see here, we have something like this. अब एक चीज तो हम जरूर कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे है ना एक अप्रोक्सीमेशन जो इस्तेमाल होता है, बेरियम सल्फेट, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल, यस और नो? प्लीज टेल मी. है ना भाई? Yes, sir. Sir. दैट मीन्स इट डज नॉट डिसोसिएट इजिली. एक तो टूटता नहीं है. राइट नाउ जितना टूटता उससे भी कम टूट रहा है, यस और नो? Whatever Yes. amount it was breaking, it is breaking even less right now. So I can say if I compare 0.05 and X, 0.05 will be too large. Can I say that, yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. That is why I can ignore the X. बात समझ में आ रही? Where दोनों केसेस में क्या दोनों से इग्नोर करते क्या? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे इग्नोर करेंगे ना, because we are adding here. ठीक है, so I will ignore it and I will get 0.05 into X will be equal to 1.1 into 10 to the power minus 10. X will be equal to 1.1 into 10 to the power minus 10 divided by 0.05 will be equal to 5 into 10 to the power minus 2. This will be equal to X
हाउ मच, कितना हो जाएगा भाई? एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना दूसरे तरीके से लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं 1.1 इंटू 10 to the power -10 इंटू 100 कर दे, 10 to the power -2, इट विल गो अबव, इट विल बिकम 100। यस और नो प्लीज टेल मी गाइस, चलेगा? Yes, sir. डिवाइड बाई 5, सो 5 20 हो जाएगा, एंड द x विल बी इक्वल टू 22 इंटू 10 to the power -10 moles per liter, एंड दैट इज द सॉलिबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट, है ना? वही सॉलिबिलिटी आगे x, बेरियम 2 पॉजिटिव जो बेरियम सल्फेट निकल रहा है कितना है? 22 इंटू 10 to the power -10 moles per liter। कॉपी दिस डाउन, raise your hand once you're done। ठीक है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन, दिस इज द इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन, कॉमन आयन होने की वजह से। ठीक है, सो दीज आर द टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। अब एक आखिरी सवाल, प्रेडिक्टिंग द प्रेसिपिटेशन इन रिएक्शन। वेटिंग फॉर टू मेनी गाइस, जो बेटा वगैरह सबके लिए हम इंतजार करें, प्लीज राइट दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू डन। जस्ट वेटिंग फॉर जैनम।
Done, everyone? Zainab, are you done? Zainab? Okay. Yeah. All right, next. Predicting precipitation. Predicting precipitation इन या फिर आफ्टर रिएक्शंस वगैरह के हिसाब से जब भी मतलब किसी दो सोल्यूशन को ही मिलाने पे भी हो सकता है. तो देयर आर टू डिफरेंट केसेस. वन इज if ionic product it is greater than KSP, तो PPT मिलेगा आपको. And if we have the ionic product it is less than KSP, then obviously PPT will not occur. Now, what is the meaning of ionic product? Ionic product is the product of the concentration of ions. KSP तो एक constant होता है, but किसी solution में कितने ions हैं, whatever the number of ions we are having, उसका जो product होगा that is going to be the ionic product. ठीक है, so I will write this down. What is ionic product? It is the product of actual concentration of ions in solution. ठीक है, इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे किससे, विद अ क्वेश्चन ना. काफी टफ माना जाता है ये सवाल, बट आराम आराम से हम लोग जब पढ़ेंगे इसको तो आराम आराम से सवाल हो भी जाएगा. ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी टू मच. ठीक है, प्लीज हाँ राइट दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद फिर हाथ रेज कीजिएगा. आराम से सवाल को लिखिए, सवाल को समझते हैं. अच्छा शाइमा, यू गेव अ टेस्ट टुडे ना Yes, ऑन sir. इक्विलिब्रियम. हमने तो पढ़ाया नहीं था, हमने तो सोचा था लाइक आई मतलब आई डिड नॉट नो कि बच्चे ट्यूसडे को भी एग्जाम देते हैं. आई मोस्टली थॉट कि बच्चे ट्यूसडे को एग्जाम नहीं देते हैं, सैटरडे संडे वगैरह को देते होंगे. बट हाउ वाज इट, कितना हो पाया? ये वाला पोर्शन नहीं हो पा रहा होगा ना, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, या फिर ये कर लिया था आपने स्कूल से? Yes, I was able to do it. यू आर एबल टू डू. ठीक है, गुड.
Raise your hand once you're done writing the question. Waiting for Abhi, Jobita, Jasleen, Shaima, and Zainab. Waiting for Jasleen and Shaima. Just waiting for Shaima. The concentration of sulfide ion in 0.1 molar HCl solution saturated with hydrogen sulfide is itna. If 10 ml of this is added to 5 ml of 0.4 molar solution of the following, in which of these solution precipitation takes place? ध्यान से देखिएगा. So आराम से पहले सवाल को देखते हैं. What is the given data and everything? The concentration of sulfide ion in 0.1 molar HCl solution saturated with hydrogen sulfide is. So we have a solution of hydrogen sulfide जो कि 0.1 मोलर HCl में बनाया हुआ है ना. ठीक है. In this we have sulfide ion का जो concentration है, the concentration of sulfide ion, it is equal to how much? 10 to the power minus 19 मोलर. यहां तक सही है हाँ या ना बताएं. Yes, sir. ठीक है. Now we have certain solutions. For example, we have 4 solutions: FeSO4, MnCl2 and ZnCl2 and CdCl2. ये हमारे पास 4 solutions हैं. FeSO4, then we have MnCl2, we have ZnCl2, and we have CdCl2. ठीक है. Now we took 10 ml from here. We took how much? From here we have taken 10 ml. 10 ml, हाँ. 10 ml का मतलब the number of moles of sulfide ion will be equal to molarity into volume, है ना. तो molarity कितना है हमारे पास? That is 10 to the power minus 19 and the volume is 10 ml. I am keeping everything in milli, so this will be equal to 10 to the power minus 18. ठीक. और उसके बाद इन सब में is added to 5 ml of 0.04 molar solution of the following. 5 molar केस में डाला गया है. So what we can say here is हाँ, the number of moles of इन सब का सेम है ना. 5 ml, हाँ ठीक है. Moles of metal that we are going to have will be equal to how much? 5 into 0.04. So 5 4 are 20, that will equal to 0.2 millimole. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. No problem. अच्छा, जब दोनों को मिक्स करेंगे. अच्छा, by the way, अब एक बार मिक्स करेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल if I mix FeSO4 with sulfide, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो you will get something which is known as FeS, आयरन का सल्फाइड, है ना. इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड डालेंगे तो आई विल गेट मैग्नीज सल्फाइड, जिंक सल्फाइड एंड कैडमियम सल्फाइड. डज दिस मेक सेंस? यस और नो? आफ्टर मिक्सिंग FeSO4 रिएक्ट करेगा, फिर सल्फाइड, है ना, मैग्नीज सल्फाइड, जिंक सल्फाइड एंड कैडमियम सल्फाइड बनाएगा. डज दिस मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. Now if I have number of moles of sulfide is itna, what will be the concentration of sulfide after mixing? After mixing, the number of sulfide is 10 to the power minus 18, and we have taken 10 ml from here, and from here we have taken 5 ml, right?
So overall, the volume will be equal to 10 to the power minus 18 divided by 15. This is also millimole. This is milliliter. So moles upon liter, milli cancel हो जाएगा. We will get in moles per liter. Make sense? Yes or no? Please tell me. Make sense? थोड़ा नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा तो नो सर क्यों नहीं बोलते हो यार तुम लोग? Does this make sense, guys? ओह यार Yes. लिखो मत यार. समझ में आ रहा तो हाँ बोलो, नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा हम बोल देंगे यार. प्लीज टेल मी. Should I explain this once again? No, sir. Should I explain this once again, guys? Yes or यार नहीं. अच्छा ठीक है. देखिए हमको इरिटेशन बस इसी चीज से होती है कि आप लोग बोलते नहीं है. ठीक है जैनब, अब देखिए ध्यान सुनिए जैनब, कीप योर माइक ऑन. ओके. So concentration is moles upon liter, right, Zainab? Yes, sir. After mixing, we will be having 10 to the power minus 18 moles of sulfide. Yes or no? Yes, sir. I will be having. और what will be the volume? moles हो गया, moles upon volume. volume कितना होगा? यहाँ से 10 ml लिया है और इस मेटल का कितना लिया था हम लोगों ने? 5 ml लिया था, राइट? तो जो सोल्यूशन में होगा that will be having 15 ml. Make sense? Yes, sir. है ना? This will be millimole and this will be milliliter. As you can see that यहाँ पे जो आपने 10 to the power, here we have taken ना 10 ml लिया था हमने. तो मिली यानी यहाँ पे मोलारिटी आ रहा है, राइट? सो मिली से मिली पे कैंसिल हो जाएगा. दैट इज व्हाई वी हैव गॉट मिलीमोल्स. ये चीज हम लोगों ने पहले भी एसिड और बेसिस में किया था. होपफुली आई होप यू रिमेंबर दिस. ये अब समझ में आया? Yes, sir. दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? ये कितना हो जाएगा बोलो? 0.2 number of moles and what is the volume? 15. Does this make sense? Yes or no? Please tell me, guys. For all the metals, the concentration will be 0.2 upon 15. Yes or no? ओहो, Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलिए ठीक है. That means for all the metal sulfide, I can say the ionic product will be equal to the concentration of sulfide. या फिर metal पहले ले लेते हैं, concentration of metal into the concentration of sulfide. सारे के सारे cases में जो ionic product होगा, it will be same because we have taken the same amount of sulfide and the same amount of metal also. तो metal का concentration कितना है? 0.2 upon 15 into 10 to the power minus 18 upon 15. This will be basically equal to 2 into 10 to the power minus 19. And 15 15 how much? 15 15 कितना होता है? बोलो भैया. 15 15 सा? हाँ 225. Yes. ठीक है. So we have ionic product जो आ रहा है आपका 2 upon 225 into 10 to the power minus 19. 200 upon 225 into 10 to the power, 2 जीरो हमने बढ़ाया ना, -21. अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा ये भाई? डिवाइड बाई 225 इज इक्वल टू, हाँ ये आ रहा है 0.888888 करके आ रहा है. ठीक है. सो आई कैन राइट दिस एज 0.88 into 10 to the power minus 21, which I can write this as 8.8 into 10 to the power 20 minus 20. This is the ionic product. Are you okay with the mathematics? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Now we have to compare. Now we have to compare the ionic product and the KSP. Ionic product तो सबका सेम आएगा है ना, तो और उसके बाद KSP से हम लोग को मैच करना है. तो आई विल राइट द KSP. KSP आपको यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है बिकॉज एनसीईआरटी ने ना एक टेबल दिया है बहुत बड़ा सा, उसमें सारे की सॉलिबिलिटीज KSP दी हुई है. तो एनसीईआरटी डज नॉट रिपीट एनीथिंग है ना. तो जब भी आपको लगे ना सर समथिंग इज टू मिसिंग, तो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में कहीं ना कहीं वो चीज दी हुई होगी. So it is given in NCERT that the KSP of
Iron sulfide is 6.3 into 10 to the power minus 18. For manganese sulfide, it is 2.5 into 10 to the power minus 13. For zinc sulfide, it is 1.6 into 10 to the power minus 24. And the cadmium sulfide, it is equal to 8 into 10 to the power minus 27. So now our ionic product और KSP को हम लोग को ये करना है. तो कौन बड़ा है पहले वाले में? ionic product बड़ा है या KSP बड़ा है? Which is greater? The KSP is greater, right? Ionic product में है -20. The KSP has -18. So obviously this is greater than IP. Here also this is greater than IP. In this case the IP is greater. In this case also the IP is greater. तो जहां पे IP ज्यादा होगा, in this case the PPT will occur. PPT is formed, and in these two cases PPT will not be formed. Does this make sense? ये समझ में आया? ये इमेजिन कीजिए केएसपी आपको दिया रहेगा ना, बिना केएसपी का तो आप कर ही नहीं सकते हैं. केएसपी दिया रहेगा, you just need to compare it with the IP. Does this make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. इसको आप खुद से समझ लीजिए अली, एक बार देख के खुद से समझ लीजिए. वेट अ सेकेंड. आई थिंक यू आर राइट. आई थिंक यू आर राइट. हाँ हाँ. Okay, I did a mistake, guys. Ali pointed out that this will be -22. Is it going to make any difference in the answer? देख लेते हैं एक बार. आंसर में डिफरेंस आएगा तो फिर दिक्कत होगी ना. ठीक है. विल इट मेक एनी डिफरेंस? नो, आई डोंट थिंक सो, है ना. It is still the same, right, Ali? The answers are going to be still the same, right? It's not making any sir. difference, ना. हाँ ठीक है चलिए. Thank you for finding that out. -22 होगा. Raise your hand once you're done. Waiting for Abir and Zainab.
इक्विलिब्रियम केस में ना आई विल टेल यू दैट खासतौर से आयनिक इक्विलिब्रियम में जस्ट फॉलो व्हाट योर टीचर इज सेइंग इज इम्पोर्टेंट, है ना, बिकॉज there are 73 questions in NCERT, and there are of like, even if you look at this question will be recorded tough, even though like if you go very slowly and understand each bit, it will be fine, but it will take practice to remember what you have to do next, what you have to do next, and what you have to do next, है ना. Similarly there are different questions, जैसे for example एक और सवाल है ना, मतलब these questions are I mean it is going to get you confused. अगर you can try all of these questions and then let me know if you have any problems, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर करेंगे तो फिर आपसे हो जाएगा. नाउ हाँ, करना किस वजह से, इफ यू हैव एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन योर माइंड, यू हैव टू डू ऑल द 73 क्वेश्चंस एंड इट विल बी, मतलब काफी अच्छे लेवल के सवाल भी हैं इसमें, लाइक इन एनसीईआरटी इटसेल्फ. व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट एट 298 केल्विन. इसमें केस भी दिया हुआ है कैल्शियम सल्फाइड का. उसमें पूछा कि 1 ग्राम कैल्शियम सल्फाइड है आपके पास, तो आपको डिसॉल्व करना है उसको पानी में, तो कितना पानी चाहिए होगा, एंड दे हैव गिवन द केस भी, है ना. तो इस टाइप के सवाल के बारे में, सो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू गेट सॉल्व बाय द केएसपी थिंग ओनली. केएसपी से ही, बस देखिए वॉल्यूम नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना पड़ेगा, है ना.